Hello, everyone, and a very good afternoon to all of you. One day to go, one hopefully beautiful day to go as far as the year 2021 is concerned for all of us. गुड मॉर्निंग मानस, क्या हालचाल है सर? कहाँ है? वेट, अरे मतलब लिटरली 30 सेकेंड हुआ होगा भाई। अभी भी 12:01 बज रहे हैं। 12 बजे का तो सेशन ही था। इतना थोड़ा सा वेट जो है जीवन में कर ही लेना चाहिए, है ना? फ्यू सेकेंड्स ऑफ वेट इज फाइन. So anyway, like I was saying, one day to go, and December 31st, of course, is an important day as far as the citizenship law is also concerned, because हमारे इस citizenship amendment act में जो बहुत फेमस चेंज citizenship law में आया था, as far as that change is concerned, वो पूरा ट्रिगर डेट, राइट? ट्रिगर डेट मतलब जिस तारीख से पहले कुछ देश से कुछ लोग अगर भारत आए हैं, that date was fixed as 31st December 2014, right? So 31 दिसंबर का ही वो डेट जो हमने बेसिकली फिक्स किया हुआ है. सो अकॉर्डिंगली हमारा 31 दिसंबर के एक दिन पहले ये वाला सेशन should be relevant from a time perspective, and of course आपके एग्जाम वगैरह के लिए तो citizenship law itself as well as the Citizenship Amendment Act both continue to be important part of the preparation process, right? So that's essentially what we are going to discuss. My name is Debajyoti Das and I'm an alumni of Hidayatullah National Law University. मेरा NLS बैंगलोर के एंट्रेंस में भी ऑल इंडिया रैंक 20 आया था in 2006. I've been a Microsoft intellectual property research scholar and I have worked with one of the topmost law firms in India called Amarchand Mangaldas, specializing in their capital markets team. You can all join me on Telegram. बहुत सारे लोग आप में से टेलीग्राम में हैं, ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, but those of you who are still joining in, those of you who are listening to me for the first time, please do join me on Telegram. Kal, in fact, we are having a mega quiz with some cash giveaways that I am planning to do for all of you, right? 50 questions tomorrow afternoon, right? Tomorrow afternoon we'll do it in 2 sessions. Sorry, double R होना चाहिए था. Tomorrow afternoon year end quiz, right? We will do a year end quiz, so please do join me in that. we आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में 2 सेशंस में हम इसको डिवाइड करके करेंगे, तो दोनों सेशंस का, एंड दिस विल बी फ्री एंड दिस विल बी ओपन टू एवरीवन, राइट? लीगल जीके पे ही 50 क्वेश्चंस होंगे एंड द टॉप 3 people I plan to give some really interesting prizes in either cryptocurrency, right? जो भी वॉलेट आप क्रिएट करेंगे उसमें, और I will directly give you a cash prize depending on your own preference, right? That's the plan for tomorrow. If any of you are taking up any of the subscriptions, please do remember to use my code DEB10 to get an additional 10% discount. और आपको अगर मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं, राइट, तो डेफिनेटली ये वाला कोड यूज करना ना भूलें. मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, मुझे नोटिफिकेशन आता है कि आपका कोड यूज किया गया है, so that notification is a very good feeling that people are enjoying my lectures and therefore are using my code. I'm sure most of you are aware of the various unique features of the Unacademy Plus as well as special classes platform, right? जैसा कि मैंने कहा कि कल हमारा वो फ्री क्लास होगा, स्पेशल क्लास होगा, उसमें भी we will have your poll का ऑप्शन, आप लोग ऑप्शंस मार्क कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है. You can ask your questions, raise a hand and talk to the educator. ये सारे फीचर्स कल वाले सेशन में भी होंगे, वही सारे फीचर्स आपके प्लस क्लासेस में भी होते हैं. We do have some important batches that I should inform all of you. 29 December को, yesterday only we started off with the focus law batch, which is for CLAT 2022 aspirants.
कल हमारा नो योर लॉ बैच विच इज अ बिगिनर बैच फॉर क्लैट 2023 वो शुरू हो रहा है. द DU ड्रीम बैच विच इज अ 3 month कोर्स फॉर द DU LLB एंट्रेंस ऑफ 2022 ये आपका 3rd जनवरी को शुरू हो रहा है. द लॉ एंड ऑर्डर बैच विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर क्लैट 2024 बाय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एलुमनाई ये भी हमारा 5 जनवरी को. सो आपका न्यू ईयर के बाद भी कुछ बैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस आपके शुरू हो रहे हैं. द लाइव क्विज फीचर कंटिन्यूज टू बी एक्टिव. यू कैन होस्ट योर ओन क्विजेस एंड जैसा कि हम लोग कल करने वाले हैं स्पेशल क्लास के थ्रू राइट जैसा कि हम करने वाले हैं वी विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ पोल्स एंड क्विज कॉम्पिटिशंस टुमारो. ओके बातें तो हमारी हो गई. नाउ इंडिया वाज very strongly divided. We had a lot of protests, right? Jai Hind Devesh, क्या बात है. Jai Hind, Jai Hind. There are a lot of protests from both sides. Shaheen Bagh ये वो काफी सारी चीजें हुई. A tale of two countries. The Indian Citizenship Amendment Act, we had protests saying no CAA, and we also had protests saying India wants Citizenship Amendment Act, right? Most of you, I guess, are aware of a lot of these features of the Constitution of India. Most parts of the Constitution, of course, came into effect on 26 January. But citizenship का जो part है वो actually 26 नवंबर को ही, right? 26 November 1949, that is the date of adoption of the Constitution. उसी दिन कुछ parts तो आ ही गए थे. कुछ पार्ट्स में से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं दैट इज ऑफ कोर्स द पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच केम इनटू इफेक्ट राइट विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 नवंबर 1949 itself. 26 नवंबर ऑफ कोर्स इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे एंड 26 जनवरी तो आप लोग सबको पता ही है इट इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. एंड रिपब्लिक इज एनी कंट्री जहां पर हेड ऑफ स्टेट जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. President of India is ultimately an elected representative, right? President of India आप monarchy, dictatorship और इस तरह से हमारे यहाँ नहीं बनते. This is neither Pakistan nor England, right? England has a monarchy, Pakistan तो well I mean कहने को तुम्हारा democracy है लेकिन अब क्या ही बताएं है ना. इंडिया में खैर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. Now as far as citizenship is concerned and as far as the citizenship law of India is concerned there are 4 ways, right? There are basically 4 ways in which a person can acquire the citizenship of India, can become a citizen of India, right? अभी 4 तरीके क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, राइट? जन्म ही आपने भारत में लिया है, भारत में जन्म लिया है तो आप भारतीय हैं. ओके. यू कैन अक्वायर सिटीजनशिप बाय डिसेंट if both of your parents are from India and they are Indian citizenship, or if one of the parents is an Indian citizen and the other parent and the other parent is not an illegal immigrant, अगर दूसरा वाला parent आपका illegal immigrant नहीं है तो भी you can acquire the citizenship of India. And then of course we have registration and naturalization. So naturalization में कुछ कुछ आपकी eligibility होती है कि इतने इतने साल XYZ अगर आप इंडिया में रह चुके हैं, कंजिक्यूटिवली रहे हैं, कब माइग्रेट किए हैं, पार्टीशन के टाइम कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन और कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमने प्रोवाइड किए थे. पार्टीशन के बाद भी खैर अगर आप भारत में आए हैं तो कुछ कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करने हैं. इफ यू फुलफिल दोज कंडीशंस, राइट, इफ यू सेटिस्फाई दोज कंडीशंस, then you can acquire citizenship, you can become a citizen of India by way of naturalization also, right? अब naturalization का क्या currently जो हमारा process है, a person can acquire citizenship by naturalization if he or she is ordinarily a resident of India for 12 years throughout the 12 months preceding the date of the application and 11 years in the aggregate. Okay,
The act does not provide for dual citizenship or dual nationality. It only allows citizenship for a person listed under the provisions above, like birth, descent, registration और ये सब. सो एक बस इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखना है कि भारत में दो देशों की नागरिकता आप नहीं ले सकते, राइट. सो 11 साल इन एग्रीगेट, इफ यू हैव लिव्ड इन इंडिया फॉर 11 years, नॉर्मली आपको सिटीजनशिप दिया जा सकता है, राइट. नाउ प्लीज रिमेंबर, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक बहुत मैं कहूं कि पॉपुलर एक कंफ्यूजन है, राइट, जो कई लोगों को गलत फहमी है एटसेट्रा. द इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये जो CAA 2019 के बारे में आप लोग सब सुनते हैं, द CAA 2019 इज नॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, राइट. 1955 में एग्रीगेट मतलब टोटल, राइट, क्यूमुलेटिवली. मानस आपका क्वेश्चन में देगा क्यूमुलेटिवली. सो इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लास्ट वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आर्टिकल 11 है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, राइट. आर्टिकल 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट, राइट. It empowers the parliament to make any law on citizenship. तो भारत की नागरिकता पे अगर कोई भी कानून बनाना है, राइट, तो वो कानून बनाने का पावर जो है वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है. इसमें भी हमने कुछ कंट्रोवर्सीज होते हुए देखे कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स उसमें कह रहे थे कि हम इसको नहीं मानेंगे. केरला असेंबली में एक्चुअली एक रेजोल्यूशन पास किया गया. वेस्ट बंगाल में भी हमने देखा कि कुछ कंट्रोवर्सीज चल रहे थे अबाउट दिस पर्टिकुलर CAA. नाउ ऑफ कोर्स इंडिया हैज अ क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर, एंड ऑफ कोर्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बिलीव्स एट सम लेवल कि हाँ, स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है. बट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर. नागरिकता के बारे में अगर कोई कानून बनाना है तो वो केरला की असेंबली नहीं बना सकती है या बंगाल की असेंबली नहीं बना सकती है, क्योंकि नागरिकता केरला की, बंगाल की, यूपी की या गुजरात की नहीं दी जा रही है. नागरिकता अगर दी जा रही है तो भारत की. सो देयरफॉर we have representatives, of course, from every state as far as the Lok Sabha or the Rajya Sabha is concerned, and it is the parliament which will have the power to make that particular law. अब इसी पावर को यूज करके पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया भी था, राइट. कौन सा कानून बनाया था? भारत के सदन ने कानून बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955, राइट, जिसमें जो बहुत सारे प्रोसेसेस हैं वो हमने डिस्कस किया है कि कैसे you can become a citizen of India. अब ये जो अमेंडमेंट आया है, नॉर्मली जैसा कि मैंने बताया कि 11 years if you are ordinarily a resident of India, right, if you are ordinarily a resident of India for 11 years, then in any case you will be eligible to become a citizen of India. At least आप अप्लाई कर सकते हैं भारत की नागरिकता के लिए and all of that, right. बट एट द सेम टाइम अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है, जिसमें हम कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन या कुछ स्पेशल पावर हम कुछ कैटेगरीज को प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट. इफ यू वांट टू प्रोवाइड सर्टेन प्रोटेक्शंस टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पीपल, राइट, then what is it that we have to understand and how do we have to really look at that situation? Please remember, one of the special provisions is given through the CAA 2019, right. ये जो 2000 अमेंडमेंट 2019 में CAA आया, उसके थ्रू भी कुछ प्रोटेक्शन दिए गए. अब किसको दिए गए? इफ यू बिलोंग टू वन ऑफ दीज 6 रिलीजन्स, Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians. If you belong to one of these 6 religions,
देन आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन जो है वो दिया जा रहा है. ओके, त्रासिक गुड मॉर्निंग. हेलो त्रासिक, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. क्या चल रहा है? हाउ गोज योर डे? न्यू ईयर के क्या प्लान्स है? एक ही दिन तो बचा है अब तो, है ना? ओके, so in any case what I was trying to point out कि 6 रिलीजन, इनमें से आप किसी एक रिलीजन को अगर बिलोंग करते हैं तब आपको ये प्रोटेक्शन दिया जाएगा. बट सिर्फ आप इस 6 रिलीजन से हैं और दुनिया में कहीं से भी आए हैं तो आपको प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा. राइट, इट्स नॉट दैट यू कुड बी कमिंग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड and you will still be given this protection. No, you must belong to one of these 6 religions, but also you should have come to India from one of these 3 countries, either Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान. राइट, इन 3 में से किसी एक देश से अगर आप आए हैं और इस 6 रिलीजन में से किसी एक को अगर आप बिलोंग करते हैं तब आपको ये प्रोटेक्शन मिलेगा. But again, even if you are one of the 6 religions and you have come from one of these 3 countries, Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, that is also not enough. You should have, ये भी जरूरी है, you should have entered into India on or before December 31st, 2014, right? If you've entered into India before December 31st, 2014, then you will not be treated as an illegal immigrant. Right? आपको illegal immigrant का treatment नहीं दिया जाएगा. You will be given a non-illegal immigrant status, basically legal migrant into India. Right? अब अगर आप ये तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, लेट्स से इफ यू आर अ क्रिश्चियन फ्रॉम पाकिस्तान और इफ यू आर अ बुद्धिस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान, राइट, अब तो तालिबान और ये सब भी इतना प्रॉब्लम हो गया है अफगानिस्तान में. इफ यू आर अ बुद्धिस्ट फ्रॉम अफगानिस्तान एंड you've come to India before 31st December 2014, तो ऐसा नहीं है कि आपको अगले ही दिन भारत की नागरिकता दे दी जाएगी. तब भी इट्स नॉट अ वन डे एक्सरसाइज. तब क्या होगा? तब ये होगा कि नॉर्मली, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि नॉर्मली एटलीस्ट 11 इयर्स का एलिजिबिलिटी होता है. राइट, कि आप भारत में 11 साल से थे या भारत सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आप काम करते थे, सर्विस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, रॉ के एजेंट थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट थे, कुछ भी था. अगर आप 11 साल के लिए, सो आप 11 साल इंडिया में तो नहीं थे लेकिन भारत सरकार के लिए काम करते थे, आप पाकिस्तान में काम करते थे या नेपाल में या टर्की के एम्बेसी में अटैच थे, जो भी था, यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप. बट इस कैटेगरी में हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगर आप बिफोर 31st December 2014 इंडिया आ चुके हैं तो ये जो 11 साल का रिक्वायरमेंट है ये 5 साल हो जाएगा. राइट, इट्स जस्ट अ चेंज. इट इज जस्ट अ चेंज इन टर्म्स ऑफ द एलिजिबिलिटी. जो नॉर्मली एलिजिबिलिटी पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो कितने साल तक आप भारत में रहेंगे तो आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी एज फार एज इंडियन सिटीजनशिप इज कंसर्न. दैट एलिजिबिलिटी पीरियड फॉर एवरीवन, इवन टुडे, राइट. तो ये जो बहुत कंट्रोवर्सी भी चलता है कि मुस्लिम्स को नहीं अलाउ कर रहे हैं एक्सेट्रा, so that's not, it's just that even today if there is a Muslim from Pakistan who wants to apply for Indian citizenship, like for example Adnan Sami, right, for example somebody like Adnan Sami who is a Muslim and he is from Pakistan, if he wants to apply he will continue to be eligible, but उसका जो पहले एलिजिबिलिटी था, जो बाकियों का भी था, क्रिश्चियंस का भी था, बुद्धिस्ट का भी था, क्या था, 11 साल था. दैट इज द सेम एलिजिबिलिटी दैट कंटिन्यूज, राइट. उसकी एलिजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, 11 साल था और 11 ही साल है.
राइट। अब बस कुछ कैटेगरीज के लिए हो गया कि अब आपका 11 साल था, लेकिन अब आपका रिक्वायरमेंट 11 साल का नहीं है। यू विल हैव ए फास्टर एलिजिबिलिटी, एंड दिस फास्टर एलिजिबिलिटी इज 5 years of eligibility, right? Of course, complications, controversies सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे हैं। मिलियंस ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन फ्रॉम बांग्लादेश आसाम में आए थे, डेमोग्राफी चेंज हुई है, बहुत सारा स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेस हो रहा है। क्रिटिक्स ये भी आर्ग्यू करते हैं दैट दिस इज अ वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, क्योंकि अगर हमने कुछ लोगों को दिया है तो हम सबको क्यों नहीं दे रहे हैं। और सरकार भी उसमें अपनी बात कह रही है कि भाई अगर हम 5 में से किसी एक की मदद कर रहे हैं तो और बाकी 4 की नहीं कर रहे हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते ना कि बाकी 4 की जब तक मदद नहीं करोगे तो इस एक बेचारे की भी मदद मत करो। ठीक है, मे बी वी आर नॉट एबल टू हेल्प एवरीवन, राइट, बट इफ वी हेल्प वन देन यू शुड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम हेल्पिंग दिस वन पर्सन कि नहीं नहीं या तो सबकी हेल्प करो या किसी की हेल्प मत करो। भाई 5 में से किसी को एक को भी बचा सकते हैं तो कम से कम एक को तो बचाए। जरा if you look at that, so that's the government's position. There are of course other people saying no, you have to ensure there should not be any form of discrimination, even when it comes to positive discrimination on the grounds of religion, even if it is for foreigners and migrants जो बाहर से इंडिया आ रहे हैं, तो भी या तो आप सबको दीजिए या किसी को ही मत दीजिए is one of the positions that is being taken. So let's see how that story will evolve. Let's see how that story is continuing to develop. Ultimately the decision is with the Supreme Court now, right? अब तो घूम फिर के जो भी डिसीजन लेना है भारत की सर्वोच्च न्यायालय उसको लेगी। But I just want to conclude by saying India of course has had a very long history, right? Sir, only for 3 countries 5 years हो जाएगा। हाँ देवेश सर, बट ओनली फॉर 3 कंट्रीज की बात नहीं है, ये नहीं कि उस 3 कंट्रीज में से कोई भी आएगा। तो जो 2014 31 दिसंबर से पहले आ चुके हैं और वो वन ऑफ दीज 6 रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, राइट, फॉर देम द एलिजिबिलिटी इज 5 years, राइट। और अब तो एलिजिबिलिटी हो ही चुका है उनका, राइट, 2019 में 5 साल कंप्लीट हो गए थे। So they're already eligible. If they apply, they apply. If they don't apply, then they don't apply, right? So that's the position. Okay. India has had a long history, let me point out, of refugee acceptance, even though we are not bound by the applicable UN protocols on refugees, etc. And one last thing, I think, the recent developments in Afghanistan perhaps, maybe, strengthens the argument of the government, even if it is to a very, very small extent, कि अभी तो कम से कम अफगानिस्तान में इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि अब तो कम से कम कुछ लोगों को हम वापस जबरदस्ती भेजना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा गलत हो जाएगा। सो इतना छोटा सा हमारा चर्चा था। सिटीजनशिप लॉ इटसेल्फ इज अ मच बिगर डिस्कशन। पार्ट 2 पूरा हमें जानना चाहिए, राइट, जो हम स्पेशल क्लासेस में और प्लस के क्लासेस में, राइट, स्पेशल क्लासेस और प्लस की क्लासेस में ज्यादा डिटेल में आई कीप डिस्कसिंग the entire citizenship law. So please do join me in those plus sessions and in the special classes sessions जो मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहूंगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, please do remember to use my code DEV10 guys. Do also remember to subscribe and hit the bell icon ताकि YouTube के भी कोई notifications अगर आपको आने हो तो आपसे मिस ना हो जाए। In the meanwhile, have a lovely day everyone. I will see you guys very, very soon today evening with the plus sessions as well as tomorrow with the mega quiz of 50 questions and some awesome prizes in both cryptocurrency as well as cash, right? Thank you everyone. Have a lovely, lovely day ahead of you. Bye bye.